Okay, so we were discussing this conservatism. Conservatism में का मतलब क्या है? Conserve करना, protect करना, save करना, conserving the old culture, saving the your old tradition, culture and all. Now conservatism में क्या था? After 1815, why after 1815? 1815 तक major parts of Europe was under Napoleon. In 1815 Napoleon was defeated. किसने defeat किया? तीन लोगों ने मिला के. तीन लोगों मतलब तीन groups को, not तीन. I think it was four, not तीन, चार था. Britain, Prussia, Russia and Austria. Now four of them together collectively मिलके नेपोलियन को defeat किया. After Napoleon was defeated, so जो changes नेपोलियन ने लाया था, as we have discussed, the changes which was brought by Napoleon, those changes are called Napoleonic Code, or it is also called Civil Code of 1804. Right? Napoleon's way of ruling, policies and all. So 1815 Napoleon was defeated. After 1815 ये ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों ने डिसाइड किया चलो जाके मीटिंग करते हैं, बैठते, लेट अस सिट टुगेदर and go for a meeting. They met at which place? Vienna, Treaty of, and they had come to an agreement which was called Treaty of Vienna. The meeting was hosted by Duke Metternich, who was an Austrian chancellor. The main objective of the meeting, it has got two objectives. The main object, first of the main objective was of the meeting was to undo all the changes which was done by Napoleon. Napoleon ने जो changes लाया था उन सबको हटाना है, उन सबको undo करना है. एक ये था. Next उसका दूसरा intention ये था to bring back, restore monarchy. Because when Napoleon was ruling, वो monarchy हटा दिया था. But then again, as I told you, that after 1815 conservatism came back. पहले भी conservatism था, बीच में Napoleon आया, अभी फिर conservatism आ गया. But कुछ conservatives people, the follower of conservatism are called conservative. So कुछ conservatives people, they said that कि देखो नेपोलियन ने जो changes किया, we will undo that. But there are some changes which is done by Napoleon, and those changes are are a big advantage for us. Like for example, I'll tell you, modern army, efficient bureaucracy. So these are the things which will also help the conservatives or the conservatism way of ruling. So let us keep these changes. इसको हम टच नहीं करते, इसको ऐसे ही रख दो, बाकी चेंजेस हम अंडू करते. सो सम ऑफ द कंजर्वेटिव्स सेड सो. समझ में आया? नो आफ्टर दैट 1815 के बाद जब कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव्स दोबारा अपना एरिया, अपना रूल, अपना कंट्रोल सेटअप कर लिया, आफ्टर दैट कंजर्वेटिज्म, वी नो मोनार्की, एनीबडी गोइंग against conservative or even raising any sort of question or questioning their legitimate, they will be, what do you call, it was not allowed. They will be suppressed in any best possible manner. In fact, more censorship law came back. Newspaper में जो तो तुम नहीं छाप सकते, forget about newspaper, even books, plays, songs, drama, nothing can be published as per your own wish. That liberty of press was taken away, liberty of freedom was not there. But so that means this conservatism, जो चीज़ जो आज़ादी थोड़ा बहुत नेपोलियन ने दिया था लोगों को, as I told you earlier also, people were really happy with Napoleon's way of ruling. There was only three things which people did not like when it comes to Napoleon. What are those? Once again, increased taxation, then forcefully recruiting people into his soldier army, and censorship, right? Otherwise, administrative wise and all, freedom wise and all, Napoleon was better. But when conservatism came back again, they took away everything. Even though they took away everything, these people of Europe, they had something motivating them. What was motivating them? The memories of the French Revolution. How people, fought, they did not give up. So those memories kept them inspiring, motivating, encouraging. As a result, this liberal nationalist people, they started criticizing this new conservative order. They said नहीं, ये जो तुम लोगों ने नया ऑर्डर दिया जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रहेगा, ये तो गलत है. सो दे वेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव्स. समझ में आया? वे जस्ट, अब मैं पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम एज यू गाइज हैव रिक्वेस्टेड. सो जस्ट मेन की नोट्स ये याद रख के जाना, उसी को यू कैन फ्रेम अप इन योर ओन वे. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद व्हाट वी हैव रेवोल्यूशनरीज. हु आर द रेवोल्यूशनरीज? When it comes to revolutionaries in Europe, one of the main revolutionaries, Giuseppe Mazzini, he was an Italian, right? He was a very young fellow. In fact, when this conservatism came back, or conservative came back, and they had set up their rule again. Now secret societies were being formed. What was the main intention of the secret societies? The main intention of the secret societies was to train or to spread the ideas of the revolutionaries. So likewise, ये जो Giuseppe Mazzini था, he was a young fellow. He was born in 1807. So he also joined up just as a member of one of the secret society,
and when he became a member of one of the secret society which he joined, that the name was Carbonary, right? Now एक नॉर्मल मेंबर बना था वो, ऐसा नहीं कि वो उसका लीडर था या फिर उसका बॉस था समथिंग। एक नॉर्मल मेंबर बना। मेंबर बनने के बाद यंग फेलो था, एट द एज ऑफ 24 उसको एग्जाइल भेज दिया। क्यों? 24, यंग गाय, यूथ, ही वाज सेंट टू एग्जाइल। व्हाई वाज ही सेंट टू एग्जाइल? आ गया उसके अंदर जोश। देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड लिगुरिया, राइट? लिगुरिया में ही वेंट फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन। एक तो कंजर्वेटिज्म का रूल चल रहा है, वो चला गया लिगुरिया में, हम रेवोल्यूशन लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। पकड़ लिया बेचारा को वहां पे, सेंट टू एग्जाइल। लेकिन एग्जाइल जाके भी वो चुप नहीं रहा। इनफैक्ट आफ्टर ही वॉज बींग सेंट टू एग्जाइल, at first he was just a member of a secret society, but once he was sent to exile, in the exile he himself founded two secret societies. He was the founding, he was a founder. एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप, उसने खुद फाउंड किया। द व्हेन ही फाउंडेड दिस टू सीक्रेट सोसाइटीज, दिस द पीपल दोज हु जॉइन दिस सीक्रेट सोसाइटीज, डेफिनेटली ही वाज अ यंग फेलो। सो लोग भी वैसा ही ज्वाइन करेगा जो उसके तरह का मेंटालिटी है, इस उसके जैसा सोच है, लाइक माइंडेड पीपल। सो पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस यूरोप, लाइक पीपल फ्रॉम young man, people means young man, okay, because he himself was a young guy. People, young men from France, Italy, Poland, German areas, because that time there was no Germany, German areas were there. So all these people came and joined, because Mazzini, Mazzini का एक अपना ही philosophy था. He has his own way of believing. He believed that this nation meant country is something, this is a natural right of every individual. That's what Mazzini believed. He said that this is something natural and it cannot be taken away from us. And he was an Italian guy, and during this time when he was doing all these things, when this revolution was going on, let me tell you, Italy was not there. आज जो इटली हम लोग पढ़ते हैं ना ग्लोब में, या फिर एक मैप देखते हैं ना, इटली एक कंट्री, this time Italy was not there. Italy was divided into 6 or 7 parts. You'll get, I think, 6. It was divided into different areas, and it was under different rules, different rulers. So he being an Italian guy, his first intention, his first aim, his first work was that to unify Italy, कि इटली को मुझे एक साथ एक सिंगल यूनिफिकेशन लाना है, एक साथ जोड़ना है। ये जो अलग अलग हिस्सों में बांट के, नॉर्थ साइड किसके पास है, साउथ साइड किसके पास है, सेंट्रल किसी और ने ले लिया, मुझे इन सबको लाके एक इटली बनाना है। सो दैट्स व्हाट हिज मेन इंटेंशन वाज। इनफैक्ट he said that if I can unify Italy, that itself will be a liberty, will be the freedom of Italy. And following his model, what he did, there were many secret societies which came up later on following him. Like there were secret societies which came up in Germany, which came up in France, Switzerland, Poland, inspired by Giuseppe Mazzini, right? Inspired by his secret societies. In fact, he continuously he kept on opposing this monarch and all, no matter he was sent to exile or whatever. You remember Duke Metternich, the Austrian chancellor, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट किया था? ड्यूक मेटरनिच ने एक, आई कोट हिम, उसने एक कहावत बोला, डायलॉग, हाँ, इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है। ड्यूक, अकॉर्डिंग टू ड्यूक मेटरनिच, ये जो गिउसेppe मज़िनी है ना, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आवर माने कंजर्वेटिव, देयर सोशल ऑर्डर, बिकॉज ड्यूक मेटरनिच एंड ऑल दे फॉलो कंजर्वेटिज्म. So, according to him, he has described Mazzini as the most dangerous enemy of his social order. समझ में आ गया? Clear? Recap. Next क्या है? Age of Revolution 1830 to 1848. 1830 to 1848. This 18 years, यूरोप में lots of ups and downs, rock and roll, ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ. सबसे पहले तो तुम्हारा यूरोप में क्या हुआ था? फ्रांस में जुलाई 1830 में एक अपहीवल हुआ था, एक बड़ा सा वार ब्रोक हुआ था। क्या वार हुआ था मैं बोलता हूँ। नो सी, द बोर्बन किंग, पहले तो सबसे पहले क्लास 9 में जाओ, लुइस 16 वाज द लास्ट बोर्बन किंग। क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो बोर्बन किंग सबसे पहले तो, और उसके बाद नेपोलियन जब आया, मोनार्की हटा दिया, करेक्ट। सो सी, पहले बोर्बन किंग था, उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, नेपोलियन ने हटा दिया, कंजर्वेटिज्म ने फिर से बोर्बन किंग को लाया, बोर्बन डायनेस्टी को लाया। Now, after that, the liberal revolutionaries, liberal my people, educated middle class, they again removed monarchy. They said, अगर monarchy रखना है, we want a constitutional monarchy. Means kingship से हमें problem नहीं है, but there must be a constitution. Means king को भी rules and regulation, law and order follow करना पड़ेगा। ये नहीं कि king जो मर्जी, constitutional monarchy. Constitution का मतलब क्या है? Basic set of rules and regulation, that's called constitution. Are you getting it? So, इन जुलाई 1830 फ्रांस में एक अपहीवल स्टार्ट हो गया
ये लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, उन लोगों ने किंगशिप को, जो किंगशिप था, जो मोनार्की था, बोला कि नहीं, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेट अप. एंड हु वाज द किंग एट दैट टाइम? लुइस फिलिप. ओके. तो ये कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में. फिर से आ जाते हैं ड्यूक मेटरनिच, हमारा हिंदी हीरो, बिकॉज वो डायलॉग अच्छा अच्छा देता है. यहाँ पे भी उसने एक बहुत अच्छा डायलॉग दिया. उसने क्या डायलॉग दिया? ये पेज नंबर 13, आई कोट हिम. व्हेन फ्रांस sneezes, एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड. मतलब फ्रांस को अगर वो हाक्ची आ गया ना, वो पूरा का पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम लग जाता है. मतलब व्हाट ही एक्चुअली वाज ट्राइंग टू से इज दैट फ्रांस इज द मेन सेंटर. अब फ्रांस में हुआ अपहीवल, इसका मतलब पूरा ना पूरा यूरोप में कुछ ना कुछ होने वाला है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट तो होगा ही. कहीं पे सर दर्द होगा, तो कहीं पे बदन दर्द, कहीं पे विक्स पे पूरा लगाना पड़ेगा. फ्रांस में हाक्ची आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसके बाद देखता हूँ कहाँ पे क्या हुआ. Seeing this July Revolution, after that there was an uprising, a protest, a revolt which started in Brussels. Brussels कौन सा जगह है? Capital of Belgium, right? Now earlier, today Belgium is a separate country, but there was a time when this Belgium was a part of United Kingdom. So जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ इन फ्रांस 1830, आफ्टर दैट ब्रुसेल में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ एंड ब्रुसेल ब्रोक अवे. ब्रुसेल इज द सेंटर ऑफ बेल्जियम, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. एंड बेल्जियम, इट बिकेम अ सेपरेट कंट्री. इट ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड. एंड टुडे बेल्जियम इज अ सेपरेट कंट्री. समझ में आया? सी, ड्यूक मैटरनिच ने बोला था व्हेन फ्रांस नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कॉल. यहाँ पे खत्म नहीं होता है. फ्रांस में जुलाई अपीवल हुआ था, बेल्जियम में प्रोटेस्ट, बेल्जियम कंट्री बन गया. और भी बाकी है, ग्रीस है, और भी है. आर यू गेटिंग इट? अच्छा, सो बेल्जियम आफ्टर जुलाई अपीवल इन फ्रांस, बेल्जियम, आफ्टर बेल्जियम नाउ ग्रीस. ग्रीस में भी इसका इफेक्ट हुआ. नाउ व्हाट हैपेंड इन ग्रीस? ग्रीस फ्रॉम फॉर ऑलमोस्ट 3 centuries. 3 centuries मतलब 300 years, बिकॉज क्रिकेट में पता है ना, एक सेंचुरी मतलब 100 रन. सो 3 century, फॉर 300 years ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर इज अ मुस्लिम एम्पायर, अ मुस्लिम डायनेस्टी. नाउ by seeing this, what happened in France, what happened in Belgium, the growth of revolutionary nationalism in Europe, it was also growing slowly, gradually. ग्रीस में भी अब नेशनलिज्म का वो हवा फैल गया था कि हमको अपना नेशन खुद बनाना, और बहुत हो गया किंगडम के अंदर रहना, किसी और एम्पायर के अंदर रहना. वी वांट आवर ओन इंडिपेंडेंस. सो बेसिकली द बैटल फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन द ईयर 1821. This is when it started. After that, lots of support Greece got, even from the Western, even from this, what do you call, the West Europeans. They also said that नहीं, Greek को आज़ाद होना चाहिए. In fact, the Greek civilization, Greek का जो culture है, the Greek culture, that is the main culture of the whole of Europe. That is the cradle, baby का जो एक शुरुआत है, वहाँ से शुरू होता है. Lots of poets, lots of artists, they also supported this Greek war of independence. In fact, there was this one famous poet, English ब्रिटिश का था, लेकिन उसने भी सपोर्ट किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हिज नेम वाज लॉर्ड बायरन. अब बेचारा पोइट है. पोइट का मतलब जो पोम लिखता है, पेन चलाता है. चला गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जंप मार के, कूद के इंडिपेंडेंस फ्रीडम लाएगा. इनफैक्ट व्हेन ही वेंट टू सपोर्ट दिस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ही ऑर्गेनाइज्ड फंड फॉर इट, लोगों से फंड इकट्ठा करके. बट वार तो छोड़ो, वो 1821 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड. 1824 को बेचारा चला गया, मर गया. दैट मच ही फॉट. एंड यू नो द रीजन व्हाई डिड ही डाई? आउट ऑफ फीवर, right? He died, passed away out of fever. But finally 1832 Greek को independence मिला, Greece को independence मिला. Greece became an independent nation, and again there was a treaty signed between this Ottoman and Greece. That treaty was called Treaty of Constantinople in 1832. So 1821 it started, 1832 Greece finally got independent. Next, as we have studied in the rise of nationalism, this what do you call? There's this chapter, na, India, nationalism in India, right? That when we fight for nationalism, when we want to spread nationalism, there are different ways. One is protest movement, andolan, vagera. The other one is without protest movement also we can spread through culture, through tradition, through folklore, through music, through language. Same thing happened in Europe as well. So in Europe, this is called kind of, you know, romantic or romanticism, you can say. The romanticism way of spreading nationalism through folklore. Folklore means folklore comprises of folk music, folk dance, folk songs, right? And also through this, what do you call, poems, stories, like that. Next, we have seen that this is very important, especially page number 15. Many a times ये question repeat होता है कि how did language spread nationalism in Europe? So now see, let us talk about language. How did language help in spreading nationalism in Europe? Poland
Poland was no more a one area. Poland was, partitioned at the end of the 18th century by Russia, Prussia, and Austria. Poland को तीन हिस्सा में बांट दिया गया था. Some part was under Russia, some part was under Prussia, and another part under Austria. Now, even though Poland had no existence as such, as one area, as one nation, but however, the people of Poland, okay, they wanted to keep this national feeling awakened among themselves. Now, how? Through music and language, because Poland बोल के एक देश तो था ही नहीं, कुछ एरिया इसके अंदर था, कुछ उसके अंदर था. So there was this what do you call, Karol Kurpinski, okay, Karol Kurpinski बोल के एक आदमी था. What he used to do, he used to spread nationalism. He used to spread nationalism through music, through his operas, not through protest, not through movement, not through आंदोलन, not वो मारपीट झगड़ा वो सब करके नहीं. इनफैक्ट द हमारा जो जैसे ट्रेडिशनल डांस है ना, फॉर एग्जांपल टुडे, अभी तुम यहाँ तो हम लोग आसाम के, राइट, अभी पकड़ लो हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, उसमें कहीं पे तुम शॉपिंग कर रहे हो, शॉपिंग मॉल पे अचानक तुम देखते हो कहीं पे बिहू का गाना बज रहा है या फिर कोई बिहू डांस कर रहा है, तुमको क्या याद आएगा? सबसे पहले आसाम, अपना घर याद आएगा, लाइक दैट. तो पोलैंड का जो फोक डांस था, लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका, Polonais and Mazurka became a kind of a national symbols. So through these dances, they used to keep the feeling of nationalism alive. Even though some area of Poland was under Russia, some was Prussia, some was Austria, but जहाँ पे भी ये dance होगा, तो तुमको क्या याद आएगा? भाई हमारा culture है, हमारा Poland का dance है, right? So this is how it happened. Now, when we talk about language, that how did language spread nationalism? Now, the same example, like as I told you, that Poland was no more a one nation or a one area. It was separated into different parts. It was under different areas. The area of Poland which was under Russia, okay, Russia ने क्या किया, उस पोलैंड को, उस जो पोलैंड का एरिया जो उसके अंदर था, Russia said from now on no more Polish language would be used. You will have to use Russian language. Okay, Russian language will be imposed everywhere. Now, at first, the Polish people, they also tried to do a armed rebellion, armed हथियार के साथ, against this Russian government in 1831. But the Polish people were crushed very badly. But even though they were crushed very badly, armed rebellion में crush किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे. They kept up the what do you call, the spirit of nationalism alive. How? What did they do? रशियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये एरिया हमारे अंडर है, दिस पार्ट ऑफ पोलैंड इज अंडर अस, सो यू विल हैव टू यूज रशियन लैंग्वेज एवरीवेयर, इन स्कूल, इन चर्च, इन religious preaching, everywhere. The Polish people, they decided, nah, we will use Polish language, and that will be a kind of, going against the Russian government or fighting for our nationalism. So as a result, especially in the church gathering, Polish language was used for religious instruction and all. Because of which even large number of priests, large number of bishops, they were even sent to jail. But still, they kept this continuing. So that means the use of this Polish language came to be seen as a symbol of struggle against the Russian dominance. भले ही रशिया में कैप्चर क्यों ना कर ले, हम अपना लैंग्वेज यूज करेंगे. And that was a kind of fight, a struggle, a fight for your nationalism, fight for your nation. Getting it? समझ में आया? जस्ट अभी तो चैप्टर पहले ही खत्म हो गया. We are just doing bullet points recap, okay? उसके बाद हमने देखा, we saw hunger, hardship and revolt. Especially 1830s. See, it's not written 1830. If you go through your text, it is written 1830s. S, there's a small s. Okay, so 1830s was one such year where all of a sudden in Europe population got increased. Now, when population got increased, now for example, in your family, you're 4 of you. 4 तुम लोग 4 लोग हो, खाने के लिए कुछ बनाया, so you'll be preparing as per 4 people, 4 आदमी का क्वांटिटी. अचानक एक गेस्ट कम इन हो जाता है, बिन बुलाए मेहमान, अनइनवाइटेड. तुम्हारा जो भी तुमने क्वांटिटी ऑफ खाना बनाया उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, राइट? सेम थिंग हैपेंड इन यूरोप ऑल्सो. नाउ देयर वाज अ सडन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप, स्पेशली इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स वर मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर. Suppose if there is 10 jobs, 10 vacancies, 100 people are standing in a queue. So 100 में से तो 90 को ही जॉब मिलेगा. 10 को ही जॉब मिलेगा. What about the remaining 90? वो तो जॉबलेस. कहाँ जाएगा? That was one thing. Plus, population from the rural areas or nearby village areas they migrate to the cities. क्यों? In search of job. अब जब कोई गांव से शहर आता है नौकरी के लिए, पहला तो कुछ दिन के लिए वो पैसा लेके आएगा, चलो ठीक है, तो क्या गारंटी है जाते बराबर नौकरी मिल जाएगा? What if you don't get job? फिर और द मनी जो तुम लेके आए हो उससे तुमको सर्वाइव करना पड़ेगा. यू कैन नॉट अफोर्ड अ गुड बेटर लिविंग अंटिल एंड अनलेस यू गेट अ जॉब, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव विद दैट मनी अनलेस यू गेट अ जॉब. सो एज अ रिजल्ट स्लम्स, झोपड़पट्टी, वो सब बढ़ने लग गए.
होटल में कितना दिन रहोगे, कितना अच्छा होटल में खाओगे, कितना क्या करोगे. That was another thing. Plus, the small producers, जो छोटे मोटे producers थे, छोटे मोटे businessmen थे, they were also having a great tough time. Why? Because this was also the time 1830s, if you remember, the industrialization भी तभी हुआ था. Big machines, technologies were coming up. So जो big large producers है, उसको तो क्या वो बड़े बड़े machines खरीद लेंगे, cheap goods बना लेंगे. But the small producers, so they were having a very tough time. Good competition. Next, another problem is 1830s to 1830 to 1848 जो था ना, this 18 years, Europe had lots of ups and downs, as I already told you. वहाँ पे problem end नहीं होता है, the problem continues. Now, for example, this see, there were some areas in Europe, as we have already discussed, that where aristocracy still existed, right? In those areas, the peasants, the farmers, they were struggling a lot. They were under the burden of feudal dues, feudalism, correct? Plus, food prices went up high. Food prices went up high due to various reasons. First of all, demand and supply economy. जब डिमांड बढ़ गया और सप्लाई नहीं है, मतलब if there are 10 requirements of a particular thing but you have two, that two, and you see 10 customers, you can sell that two at any price, correct? Plus, supposingly, if there is some bad harvest, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1830s 1840s, वहाँ पे मशीन टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सब कर लो. अगर इफ देर इज नो वाटर ऑल्सो, मशीन ऑन कर लो, पानी डाल दो. इफ देर इज सम बैड हार्वेस्ट इन सम ईयर, फिनिश, तब तो खत्म. दैट विल एड फ्यूल टू द फायर. So that was the condition of Europe, all over Europe. It was such that people came out on the streets. They were like pissed off. They went against their king, Louis Philippe. There were barricades everywhere. Louis Philippe had no other option. जान बचाना है भाई, भागो. The only option that he had was to flee, save his life, run away. Now, when the ruler itself ran away, so somebody have to take over. Someone has to take the in charge. National Assembly came in between. National Assembly said that okay, we declare from now on as republic, and we will. And they came up with different policy. Suffrage दिया. They said that we will set up this what do you call working training institution जहाँ पे लोगों को train किया जाएगा. After that, we will provide job and all. Clear? That was the situation of 1830s. Now, 1830s and even in 1848. Let us go back. Some years before 1848, 1845. Example. There was one village in Europe called Silesia. Silesia was a village which was mainly, where mainly weavers used to stay. Majority of the people out there were weavers. जो कपड़ा बनाता है, हाथ से कपड़ा सिलाता है ना, weavers, weaving. Now we know, we have already studied supply merchant and all. याद है? Supply merchant लाके raw materials देता था, उसके बाद काम देता था, कॉन्ट्रैक्ट देता था कि इतना शर्ट बना दो, इतना कपड़ा बना दो, जो भी है रेट. नाउ दिस विलेज ऑफ सिलेसिया, नाउ कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी पता है कि एक कपड़े का या फिर कितना रेट है, व्हाट इज द डेली लेबर वेजेस. बट व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर एंड लोगों के पास जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज. नोइंगली कॉन्ट्रैक्टर केम एंड टोल्ड कि नहीं, मैं तो इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, आई विल गिव यू ओनली दिस मच. अगर काम करोगे तो बोलो, नहीं कर, बिकॉज बाहर रास्ते में लाइन पे लगा हुआ है आदमी काम करने के लिए. वीवर्स बोला, ये कहाँ का बात हो, आपको तो पता ही, आप इतना साल से काम दे रहे हो. What is the rate and what are you saying now? Contractors are exploiting, taking advantage. The people of these villagers, they were angry. They went out to this area, to the palace, to the society where these contractors and all used to stay, demanding high wage. कि हमारा जो wage है वो दो. The contractors, they treated these weavers with lots of insulting manner, threat, humiliation and all. In return, there was a heat exchange of words, and these weavers attacked their palaces, mansion. Everything was what do you call, तोड़-फोड़, सब सामान लूट लिया, वगैरह वगैरह. In fact, the contractor had no other option. He had to take his family and save his life. He ran away to the next neighboring village. But पास वाला village में जब गया, when the neighboring village got to know कि ये वही contractor है जिसने weaver के साथ ऐसा किया knowingly, the neighboring village also said no भाई, हम तुमको यहाँ पे नहीं रख सकते, जाओ. फिर वो कॉन्ट्रैक्टर गया, ठीक है देख लूंगा. वो कुछ समय बाद आता है, अब 24 घंटे या 24 hours later, but he comes back now with a soldier. And in that, when he returns back with the soldier, again they have a heated debate with this contractor and the villagers. In return, some around 11 weavers were shot. Clear?